I'm audible. Okay, thank you. So in the previous sections, we did the introductory part of financial management. That was what is exactly financial management, what are the components of its definition. Then we did the three major functions that were financing, investing, and dividend decisions. Then we did two objectives of financial management, and उसमें हमने किया था profit maximization and wealth maximization, and why we prefer wealth maximization over profit maximization. Yes, इसमें कोई problem जो हमने अभी तक करा था? This is what we have covered now अभी तक. Okay, perfect. So now we have to start with a new chapter, that is time value of money. So the time value of money is the concept that money available at the present time is worth more than the identical sum in the future due to its potential earning capacity. So if I give you an option, ठीक है, कि आप या तो मुझसे 1 लाख अभी ले लो या फिर let's say 1 लाख आप 3 years के बाद ले लो, तो what option would you prefer? Yeah, let's twist it थोड़ा सा और कि if I say कि you can take 1 lakh अभी or 1 lakh 20,000 at the end of the year, what would be your stance for it? Present. Okay, अभी ठीक है. Now why? Exactly. We would prefer the current money over any future money amount because उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है. ठीक है, तभी इफ यू रिमेम्बर आई गिव यू एन एग्जांपल, जब आप लोगों like the generation you are living in and the generation our moms and dads were living in, तो उनके लिए और हमारे लिए 1 रुपए की वैल्यू बहुत चेंज हो चुकी है. उनके टाइम पे जो 1 रुपए में चीजें आती थी वो हमारे टाइम में नहीं आती because the future value of money has depreciated. That is why we always give preference to the current money or the present value of money over any future gains which we could have. ठीक है, money की value always depreciates over time. I think I was there when Manya ma'am was telling you guys कि हम लोग के टाइम पे like 1 रुपए में हाजमोला आ जाती थी. ठीक है, हाजमोला के 2 sachets आते थे. ठीक है, 50 पैसा एंड आज की डेट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी. ठीक है, so that is basically your time value of money. कि we always give preference to the current money over any future sum which we are gonna receive. ठीक है. So this core principle of finance holds that provided money can earn interest, any amount of money is worth more the sooner it is received. PVM is also sometimes referred to as present discounted value. Okay, so here they are saying कि until and unless you are gonna earn any interest over it, ठीक है, you always are gonna prefer the current money over the future. अगर आपको कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है that is a different thing. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न नहीं हो रहा है, अगर आपको ज्यादा सम ऑफ मनी नहीं मिल रहा है, सो आप हमेशा मनी को पहले प्रेफर करोगे rather than at a later date. Recording in progress. Okay, there's a question. Short run के लिए तो change भी हो सकती है. Lakshya, I didn't get your question exactly.
क्या कहना चाह रहे हो कि शॉर्ट रन के लिए मनी की वैल्यू चेंज हो सकती है? Yes, definitely. जैसे इफ यू हैव नोटिस्ड, सो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके मदर्स एंड फादर्स में जो मनी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, ठीक है, उसका मोमेंटम, जो डेप्रिसिएशन का मोमेंटम था, वो आज की डेट में तो और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। मनी की वैल्यू और ज्यादा तेजी से डेप्रिशिएट करने लग गई है। सो इफ यू लुक एट 30 years बैक, मनी की वैल्यू स्टिल इतनी डेप्रिशिएट नहीं हुई थी जितनी आज की डेट में हो गई है। ठीक है, सो इरिस्पेक्टिव कि वो शॉर्ट रन के लिए है या लॉन्ग रन के लिए है, money value would change in the future. ठीक है, but for our ease and for our estimations, we generally take that period as 1 year, because day to day calculation करना और day to day differences देखना money में pointless है और हम लोग पता भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, that is why to have a correct idea, ठीक है, better idea, हम लोग 1 year के गैप में मनी वैल्यू का चेंज देखते हैं। अंडरस्टूड कि हम लोग शॉर्ट रन को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? शॉर्ट रन में भी चेंजेस होंगे ही होंगे, बट जनरली वी टेक अप द टाइम फ्रेम ऑफ एटलीस्ट अ ईयर टू गेट एन आइडिया कि चेंजेस कितने हैं। नहीं तो 1 year के विद इन तो आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे चेंजेस को। Okay. So TVM is also sometimes referred to as present discounted value. So can anybody tell me कि डिस्काउंटिंग क्या होता है? मैंने प्रीवियस सेशन में इस टर्म को यूज किया था and I tried to explain that also. What is discounting? Okay. Decreasing the value of a product. Okay, ठीक है. Somewhat right, Vansh. थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेट करके देखो या फिर जो भी हमने प्रीवियस सेशन में किया था उससे रिलेट करके देखो। So if you remember, we talked about how we incorporate risk in our cash flows. Yes, हमने लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में बात करी थी ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क को वो नहीं करता, whereas wealth maximization takes into account the risk factor associated with the business also, and वो risk को incorporate करता है in the cash flows. Yes, so basically time value of money यही है, that we are trying to discount the risk factor associated with our money value into the cash flows which we are going to receive in the future. ठीक है, तो time value is the method to do that, to do the discounting part of it, कि हम अपने रिस्क को कैसे incorporate करेंगे in our cash flows. ठीक है, that is discounting and that is done through TVM, the time value of money. Okay, so अभी हम सबने आंसर किया था कि हम लोग हमेशा प्रेफरेंस करंट मनी को देंगे ओवर द फ्यूचर मनी। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है, फ्यूचर मनी के साथ। इट मे हैपन कि वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाए, इट मे हैपन दैट जिससे हमें पैसा लेना है वो हमें ना प्रोवाइड कर पाए उस टाइम पे वो सम। ठीक है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच कैन गो रॉन्ग, राइट? हो सकता है हमारी मार्केट्स चेंज हो जाए, तो हमें जो कस्टमर्स को हम लोग पहले सेल कर रहे थे, whatever the products we had, now the market has changed completely. ठीक है, तो हमें उतना रेवेन्यू नहीं अर्न हो रहा। So there can be n number of factors which can go wrong when we are considering the cash flows of a company.
ठीक है. So that is why we always give preference to the present money over the future money. ठीक है. अब हमने ये तो बात कर ली कि हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. क्यों जो भी हमने अभी बात करी कि ये रिस्क एसोसिएटेड है, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिए कि ओके दीज आर द रिस्क एसोसिएटेड विद आवर बिजनेस, बट हम इनको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे कि इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा हो भी जाता है तो हमें इतना फर्क ना पड़े, या फिर अगर हो रहा है तो कितना डिफरेंस आएगा, दैट वी शुड गो फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी और द फ्यूचर. ठीक है. आपको इन सारे रिस्क को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. और कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे? इनको कैश फ्लो में लेके. ठीक है. दैट इज बेसिकली योर डिस्काउंटिंग. हम लोग के जो भी एस्टिमेटेड कैश फ्लोज होते हैं उनमें हम लोग रिस्क फैक्टर को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेते हैं. ठीक है. दिस इज बेसिकली योर डिस्काउंटिंग टेक्निक. अंडरस्टूड. Okay. The time value of money draws from the idea that rational investors prefer to receive money today rather than the same amount of money in the future because of money's potential to grow in the value over a given period of time. For example, money deposited into a saving account earns a certain interest rate and is therefore said to be compounding in value. ठीक है. सो वापस से उन्होंने सेम चीज रिपीट करी है दैट as a rational investor you always prefer to receive money today rather than the same amount of money at a future date, and they have given this example that if you deposit some money into your savings account, obviously you're gonna earn some interest over it. ठीक है. एंड दैट इज योर कंपाउंडिंग टेक्निक. जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो सारा कंपाउंड होता रहता है. दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर टू डिपॉजिट दैट मनी इन द बैंक अकाउंट्स रादर देन टू टेक द मनी फ्रॉम अ पर्सन इन अ फ्यूचर डेट, बिकॉज जब वो सेम अमाउंट ऑफ मनी किसी फ्यूचर डेट पे किसी भी पार्टी से ले रहा है, ही और शी इज नॉट अर्निंग एनी एक्स्ट्रा वैल्यू ओवर इट. ठीक है. सेम सम वो कर रहा है. इससे बेटर क्या था कि वो आज सम लेके वो किसी बैंक में डिपॉजिट कर देता तो उससे बेटर रिटर्न्स अर्न होते. ठीक है. सो दिस इज द जिस्ट ऑफ इट. Depending on the exact situation in question, the TVM formula may change slightly. For example, in case of annuity or perpetuity payments, the generalized formula has additional or less factors. But in general, the most fundamental TVM formula takes into account the following variables. So before we discuss the formula, can you tell me the difference between annuity or perpetuity? What is meant by annuity and what is meant by perpetuity? So, okay. Very good, Devashish. Basically, annuity means it is on installment basis. जो भी सम है वो रीपे कैसे हो रहा है? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हो रहा है. ठीक है. ईयरली, बाय मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ भी हो सकता है. जरूरी नहीं है मंथली हो. ठीक है. एंड परपेचुइटी गोज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द व्हाटएवर यू हैव टेकन. It goes on and on. Yes, it is paid for forever. Whereas when we talk about annuity, you have that fixed amount of money which you have to pay after
every certain period of time. That period of time can be on the monthly basis, bi-monthly, yearly, quarterly, half yearly, whatever which you have decided. The main thing is कि जो भी amount होगा वो equally distributed होगा throughout the time periods. अगर monthly है तो monthly divided होगा, yearly है तो years में divided होगा equal amounts में. That is why we call them installments. Whereas perpetuity you have to pay forever. Annuity में जब time period खत्म हो जाएगा you have to stop paying. Understood? Sahil, I'll explain it again. So annuity को आप assume कर लो it's just like an installment wherein जो भी payments होंगी वो आप equal sum देते रहोगे. ठीक है? कितने टाइम बाद? Whatever time period you have defined. अगर आपने बोला है कि मैं monthly पैसा दूंगा तो आप monthly देते रहो. अगर आपने बोला है कि मैं हाफ ईयरली दूंगा तो हाफ ईयरली देते रहो. एंड अगर ईयरली है तो ईयरली देते रहो. ठीक है, बट इक्वल अमाउंट आपको देना है आफ्टर वट एवर पीरियड यू हैव डिफाइंड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. लेट्स से आपने 5 ईयर्स का बोला था एंड आपने बोला था मैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करूंगा. ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपने दैट इज कि से 5 लाख का अमाउंट था एंड आपने कहा था मैं 5 इयर्स में इसे पे करूंगा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में. दैट मीन्स कि आप हर ईयर 1 लाख पे कर रहे हो. दैट इज एन्युटी. Whereas when you talk about perpetuity, perpetuity में कोई आपका लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है. जब तक लाइफ चल रही है आपको वो पे करना पड़ेगा. Is that clear? Okay. एंड सम्यक डोंट वरी, अभी हम लोग ना डिस्काउंटिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. द एंटायर चैप्टर वुड बी अबाउट डिस्काउंटिंग. ठीक है, तो यू नीड नॉट टू वरी. अभी जब हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ टीवीएम. सो टीवीएम में यू हैव टू यूज, सो ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है. दैट इज एफवी. एफवी डिनोट्स योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. PV is your present value of money. R is the interest rate. ठीक है? N would be the number of compounding years or the discounting years whatsoever would be given in the question. And T is the number of years. ठीक है? कि हमें कब तक की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कब तक की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है. ठीक है? क्वेश्चन आता है अगर कि आप लोग ये बताइए कि आज की डेट में जो आपके पास 1 लाख है 10 इयर्स के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी प्रोवाइडेड जो इंटरेस्ट उस पर लग रहा है दैट इज गिवन एट 10%. तो यहाँ पे हमारा एन हो गया 10 इयर्स. फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है. प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है कि वो 1 लाख रुपीज है. ठीक है, एंड इंटरेस्ट रेट भी हमें गिवन है दैट इज 10% हियर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. आपको बस पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना है आपको कि फ्यूचर वैल्यू कौन सी है, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी होगी. इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट गिवन होगी. जो सबसे टफ टास्क होता है वो इसी चीज का होता है कि हमें क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हमें बोला गया है प्रेजेंट वैल्यू निकालने को या फिर फ्यूचर वैल्यू निकालने को. क्वेश्चन के कंपोनेंट्स हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. इज इट ओके? ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी. जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कौन सी फ्यूचर वैल्यू होती है, कौन सी प्रेजेंट वैल्यू होती है. आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. एंड सब लोग प्लीज प्रैक्टिस शुरू कर देना बिकॉज अब आपके पास नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है कि ऑफलाइन क्लासेस है. सो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स भी हो सकता है कि ऑफलाइन ही हो. एंड अगर ऑफलाइन हुए तो न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इस पेपर में.
ठीक है, तो आप लोग जैसे हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया था, आपने बहुत लाइटली लिया था उस सब्जेक्ट को, वैसा नहीं कर सकते हो। अगर आपने एफएम नहीं पढ़ा तो आप मतलब you can flunk this paper. It is very easy to flunk this paper if you don't study. झूठ बोल रहा है, अंदर पड़े पैसे वो तो मतलब दे देने हैं, मतलब दे देने हैं वहां पे शिवानी, आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। पोटेंशियल अर्निंग से ऐसे मैंने अभी देखा, पहले कल सारा दिन बेड पे पड़े देखो 500-500 के नोट। अब तुमने उठा के सेंटर वाले खाने में रख दी, 200 रुपए भी पड़े हुए वहां। वो तो कोई बात नहीं, तेरे यार झूठ झूठ तो मत बोल। मैंने सोचा कि मैंने कह दिया कि ले आना, हाँ कह दिया तूने ले आया। जल्दी एक सेकंड में पकड़ा के पैसे दे दिए वापस। what does what mean? मेरे हाथ के दिए हुए नोट हमने दिए वहां, हम नहीं देख चला पाके। But you can unmute yourself and ask me the question. I am not able to understand what you're trying to say. Or you can elaborate it in the chat box. पता नहीं कोई और चीज सिखाने लग जाएगा, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ तेरा ही खर्चा और किसी का नहीं। सब उतने में आराम से रह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए। भूखा लगा पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, जिसका भी नहीं पता, रखे हुए पैसे करा दे दिए, झूठ ही बोलता है। मकार कहाँ कहा? मैंने मकार नहीं कहा, शब्द बिल्कुल भी यूज नहीं करा। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, बस इतना बोला, उतने में तुम बच्चे, पोटेंशियल अर्निंग कहाँ पे रेफर्ड है? मैंने तो देखी, मैं तो लाके तेरे मुंह पे मारती, गुस्से से बोलता कि ये देख, मैं जाके 1200 रुपया निकाल के देती, मेरे पास भी बात नहीं थे, जब मैं जाकर 1200 रुपया देती, मेरे पास तो है ही नहीं, वो है ही नहीं। Okay, you are asking it in this definition. So here, let's have a quick go through of the definition again. The time value of money is the concept that money available at present time is worth more than the identical sum in the future due to its potential earning capacity. We had been discussing this again and again कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज हैं आज की डेट पे एंड तो यू हैव टू थिंग्स टू डू हियर। आप या तो उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, या फिर लेट्स से आपने किसी और को वो दे दी, ठीक है, एट द सेम अमाउंट, ठीक है। अगर आप किसी और को वो दे रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग दिस एनी इंटरेस्ट ओवर इट, वेयर एज अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते उस पर्टिकुलर सम को, तो यू कुड हैव अर्नड अ रेवेन्यू ओवर इट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपको 4-5% के अराउंड कुछ इंटरेस्ट तो मिलता है ना वापस। सो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज कि we always prefer the current money over future money because अगर हमें future में भी same ही sum receive हो रहा है, that means we have foregone the capacity to earn an extra income over our current sum. ठीक है, अगर आप वो बैंक में डिपॉजिट कर देते पैसा जो आपके पास था, तो यू कुड हैव अर्नड अ रेवेन्यू ओवर इट, जो कि आपने नहीं किया, तो यू हैव फॉरगॉन दैट पोटेंशियल टू अर्न दी एक्स्ट्रा रेवेन्यू। मेरी नजर कैसी बनने लगती और की नजर मुझे फटाफट लग जाती है। मैं इतनी बददुआएं देता हूँ, मेरी कैसी बनी लगती, जैसे वो नहीं आते आई होप इट्स क्लियर नाउ। सिर्फ दूसरों की मनुष्यत देते हैं। कहते चमार के कट्टू में मरते हैं, तेरा हाल हुआ है। चमार कहे ना कि ये हो जाए तो उनके कहने से कट्टा नहीं हाँ मिलता। लक्ष्य, दैट इज एब्सोल्युटली राइट कि हमें बैंक में भी फ्यूचर में ही मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट थिंग हियर। दे आर सेइंग कि आप अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो यू कुड हैव अर्नड एन इंटरेस्ट, लेकिन सपोज आपने वो पैसा लिया ही नहीं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस थे कि आप जिससे भी आपको पैसा लेना है वो आज आप आज ही ले लो,
और उसको बैंक में डिपॉजिट कर दूं, या फिर वो पैसा भी नहीं दे सकता, वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद देगा, आप 1 साल बाद ले लेना। 1 साल के बाद ही मुझे 1 लाख मिल रहा है और मुझे आज की डेट पे भी 1 लाख मिल रहा है, तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा? आज की डेट पे 1 लाख लूं या फिर 1 साल के बाद 1 लाख लूं? आज की डेट पे ना, क्योंकि अगर वो मैं 1 लाख जो आज मुझे मिल रहा है, वो अगर मैं बैंक में भी डिपॉजिट कर दूं, तब भी मुझे 1 साल के लिए उस पर इंटरेस्ट तो मिल जाएगा ना। रादर कि मैं 1 साल के बाद वो 1 लाख लूं और उसकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज ना हो। गॉट इट? सो अगर मैं आज की डेट में वो पैसा ले लेती हूँ, सो आई हैव दैट पोटेंशियल टू अर्न extra money over my uh, whatever sum I had, that was 1 lakh rupees. जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ओवर एंड अबव मैं इंटरेस्ट भी अर्न कर सकती हूँ, दैट इज द पोटेंशियल। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? बच्चे, perpetuity is nothing. Perpetuity is a type of contract where you have to pay that money throughout your life, throughout the lifetime. ठीक है, उसका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है। जैसे वट एवर कॉन्ट्रैक्ट वी एंटर इनटू, चाहे हम लोग लोन लें चाहे हम लोग लोन दें, कुछ भी करें, हम लोग की एक एक्सपायरी डेट होती है ना, कि आपको 5 years के लिए आपको पैसे देने हैं, 10 years के लिए देने हैं, 15 years के लिए देने हैं, वट एवर। जो परपेचुइटी होती है, दैट इज फॉर एंटायर लाइफ टाइम। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, यू हैव टू पे सर्टेन मनी थ्रू आउट। Okay. So from tomorrow onwards we'll be doing questions on it. मैंने आज डिटेल में इसीलिए इतना एक्सप्लेन किया है, so that कल कोई कंफ्यूजन ना हो when I start with discounting and compounding techniques, क्योंकि वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। I'm sharing the attendance link. Please don't forget to mark your attendance. Wish you a nice day to you two students. We'll meet tomorrow now.